So, in this lecture, we will discuss about the acids, bases, we can say acids, bases, and salts of chapter number 10. So, you can say what are acids, what are bases, and what are salts. So, let's start. So, you can say that as far as introduction is concerned to how many foods items are sold in taste, lemons, oranges, you can say grapefruits and other citrus fruits have sour taste. This sour taste is due to an acid called citric acid present in them. तो ये बता रहे कि यानी जो फूड्स होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो फूड्स होते हैं वो उसका टेस्ट कड़वा होता है, उनका टेस्ट होता है कड़वा, सोर होता है। तो ये मिसाल के तौर पर लेमन जो है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है, जिस तरह के यानी कि जो लीमू का जूस है, ऑरेंज माल्टे का जूस है, या ग्रेप्स जो है, इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, अदर जो सिट्रस फ्रूट्स है तो इसका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है। तो ये जो कड़वा टेस्ट है ये किस वजह से होता है, सिट्रिक एसिड उसमें मौजूद होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड in these fruits, so we can say that the taste of these fruits are sour. Now, we can say that bases, alkalis, and on the other hand have a bitter taste and are soapy in texture. When you wash your hand with soap or brush your teeth with toothpaste, you are using a base. Whereas salts are formed with the reaction of an acid base, table salts, baking products, etc. are some of the salts which are commonly used. In this unit, you will learn about the different concepts of acids and bases, pH neutralization reactions, and salts and its types. So, we can say that ये कह रहे हैं कि जो बेसिस है यानी अल्कलीज होते हैं जिसको हम बेसिस कहते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर सा होता है। तो यानी सोर नहीं तो उनका बिटर होता है। और ये क्या होते हैं, यानी सोपी टच होता है इनका। तो जब हम जिस तरह हम हाथ को वॉश करते हैं साबुन से या हम दांतों को टूथपेस्ट लगाते हैं, तो यानी तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि साल्ट्स जो है, साल्ट्स यानी एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। तो जिस तरह ये टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड और बेकिंग प्रोडक्ट्स है, तो ये सारे क्या है, साल्ट्स है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, pH और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड साल्ट्स एंड इट्स यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कैन से here is given this is carbonic acid, it's a bottle of carbonic acid, you say this is lactic acid, this is sour milk यानी कड़वा दूध जो होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल्स और पियर्स यानी जो सेब और नाशपाती होते हैं उनमें क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। तो इसके अलावा जो लाइम्स एंड लेमन्स है यानी कि जो लीमू वगैरह है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स है, हशरात जो है, उसमें फार्मिक एसिड होता है। जब ये डंग मारते हैं तो उस डंग के नतीजे में फार्मिक एसिड ये सिक्रीट करते हैं। तो इसके अलावा स्पेनिच ये इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, समस पत्ते जो होते हैं
इस सलाद वगैरह ये इसमें ऑक्सालिक एसिड होता है। इसके अलावा ग्रेप जूस, जो अंगूर का जो जूस होता है, उसमें टार्टारिक एसिड होता है। तो ये सारा क्या है, एसिड है। सो वी कैन से that is given the real word and reading sour milk, you can say sour milks contain lactic acids, apples contain malic acid, and grapes juices contain tartaric acid. The substances produced by ants is an acid called formic acid. Bee sting is also acidic in nature due to the presence of formic acid. Household products such as ammonia is used for cleaning purposes, or you can say sodium hydroxide, commonly known as, you can say, commonly known as lye, is used, so you can say it is used as a drain cleaner or for cleaning ovens. Milk of magnesia is a suspension in water of magnesium hydroxide and aluminum hydroxide. These are used as an antacid to relieve discomfort caused by excess of hydrochloric acid in the stomach. So these are the bases. तो इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि जो दूध का जो सोर जो दूध होता है, यानी कड़वा, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा एप्पल जो होते हैं उनमें मैलिक एसिड होता है, और ग्रेप्स जो है उसमें टार्टारिक एसिड होता है। और इसके अलावा जो शूंठियाँ जो सब्सटेंसेस पैदा करते हैं उनमें फार्मिक एसिड होता है। तो शहद की मक्खी जो स्टिंग मारती है, जो डंग लगाती है, उसमें वो बेसाडिक होता है और उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इसके अलावा जो घरेलू प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एमोनिया, इससे एमोनिया दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। एमोनिया को हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम ड्रेन क्लीनर के लिए इस्तेमाल करते हैं और क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन इन वाटर ऑफ, इसमें क्या होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये एंटी एसिड काम करता है। तो ये जो मैदे में तजबियत होती है, एक्सेस ज़्यादा तजबियत, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी क्या है, बेसिस है। Now, so this is, so you can say this is ammonia, and this is the bottle of ammonia, which are used in household for cleaning purposes. And this is sodium hydroxide, which is also used for cleaning purposes, you can say. And this is the baking soda. So you can say, now let's come towards concept of acids and bases. The word acids, the word acid is derived from, so you can say, the word acid is derived from Latin word acidus, which means sour. Acids have sour taste. तो ये कह रहे हैं कि जो एसिड का जो वर्ड है, ये लातीनी ज़बान से, यानी एसिडस से लिया गया है। इसका मतलब है कड़वा, सोर। तो क्योंकि एसिड का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। तो ये क्या करते हैं, इसमें अगर हम टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इसमें अगर हम लिटमस पेपर डालें तो वो जो ब्लू लिटमस होगा उसको रेड कर देगा। तो it changes the color of acid-base indicators. These reactions is demonstrated in figure 10.3. Aqueous solution of acids conduct electric current,
and we can say strong acids are very corrosive, destroy fabric and causes burn on the skin. तो ये बता रहे कि एसिड्स के हवाले से कि जो एसिड्स को अगर हम इको सोल्यूशन में इसका बना लें तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये कोरोसिव नेचर होते हैं और ये कपड़े फैब्रिक कपड़े वगैरह को ख़राब करता है और इसके अलावा स्किन को भी जलाता है। सो now you can say, so these are the pH paper turns red in vinegar solution. So this is the, you can say this is the litmus paper which turns red when it is put in the solution of citric acid. So this is the vinegar which containing citric acid. So we can say, now let's come towards bases and alkalis. A base is any metal oxide or hydroxide that reacts with an acid to produce salts and water. बेस क्या चीज़ है? बेस एल्कलीज है और उसको अगर हम एसिड के साथ मिला दें तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर बनाएगा साल्ट और पानी को बनाएगा। A water soluble base is called alkalis. So you can say an aqueous solution, it produces hydroxide ions. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. So this is the very important point to be noted that all alkalis are bases. जितने भी alkalis हैं वो सारे bases होते हैं, लेकिन सारे bases जो है ना वो alkalis नहीं होते। So this is, you can say that this are, you can say all alkalis are bases while all bases are not alkalis. So preparation of it's a basis. Bases have better taste and feel soapy. It turn red litmus paper blue. जो bases है वो red litmus paper को blue करते हैं, यानी blue बनाते हैं जो red litmus paper होता है। तो so you can say that it changes the color of acid base indicator. This section is demonstrated in figure 10.5. You can see strong bases are corrosive and conduct electricity and dissolved in water. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उसमें बिजली पास हो जाती है और ये जो है वो जब हम इसको पानी में हल करते हैं और ये कोरोसिव होते हैं। So we can say that next one is the reaction of lemon juices with baking soda. So this is demonstrations given. We need a balloon, a soft drink, a bottle, lemon juice, baking soda. So first one is instructions. Before you start, make sure that you stretch out the balloon to make as easy as possible to inflate. So you can say pour the lemon juice into a soft drink bottle. पहले बोतल में जो है लेमन जूस को डालें, उसके बाद फिर बेलून में जो है ना बेकिंग सोडा को डाल दे, तो बेलून्स को फिर बोतल की मूत के ऊपर लगा दें, तो फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। ये इस तरह बेलून लगा हुआ है। तो write down your observations. So you can say that in this case carbon dioxide is released, with which the balloon becomes swelling started in the balloon. So carbon dioxide is filled in this balloon, with which it swells. यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग होती है, गैस बोतल से आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो है ना इसको। Our next one is, you can say, Arhenius concept of acid and bases. So Arhenius Swedish chemist explained the aqueous solution of acids and bases can conduct electric current by producing ions in aqueous solutions. According to Arhenius concept in 1884,
An acid is a chemical substance that dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion. तो ये अर्हीनियस जो है इन्होंने 1884 में एक थ्योरी पेश की। तो ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। तो उसने कहा कि जो एसिड होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। तो इसको जब हम एक्वस सोल्यूशन में हल हो जाता है और एक्वस सोल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयंस पैदा करता है। सो यू कैन से दैट इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन aqueous solution. Or you can say, according to Arhenius, acid is a substance which gives hydrogen ions in aqueous solution. So here is given example. This is an acid which produces H plus ions and A minus. So when it is put in water, for example, the substances such as HCl, sulfuric acid, HNO3, acetic acid, HCN, etc. are acids because they ionize in aqueous solutions to produce H ions. ये जितने भी हैं HCl, H2SO4, HNO3, C3H और HCl, ये सारे क्या है? एसिड्स हैं, क्योंकि ये इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में और ये क्या पैदा करते हैं? H आयंस को पैदा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius, acid is a substance which produces H ions. So because in this H it produces H ions in aqueous solution, so you can say that this is an acid according to Arrhenius. So now this is the table of some acids in their solutions: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, phosphoric acid. So you see that HCl produces H ion, chloride ions, H2SO4, sulfuric acid produces H ions and HSO4 ions in aqueous solution or water. So we can say nitric acid produces H ions and NO3 ions, or acetic acid produces C3H produces in water acetate plus H ions. Phosphoric acid produces H plus and PO4 ions. So we can say that all these are acids because they produces H ions. So we can say these are H ions, these H ions, so these are also H ions and this is also H ion. So according to Arrhenius, these all are acids because they produces hydrogen ions in aqueous solution. So this is water. So this is aqueous solution. Now we can say that let's come towards the Arrhenius base. So Arrhenius base is a chemical substance that dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions, OH ions. So we can say this is the OH ions. This is the OH ions. So most of the bases dissociate in solution to release hydroxide ions. Other bases, substances that react with water to remove hydrogen ions, leaving hydroxide ion in solution. Generally, the ionization of bases takes place as follows: BOH in water produces B plus and OHO minus. तो ये बता रहे कि जो Arrhenius बेस, पहले हमने पढ़े Arrhenius एसिड, अभी हम पढ़ेंगे Arrhenius बेस। तो Arrhenius बेस क्या होता है? According to Arrhenius, बेस क्या है? बेस एक केमिकल सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू Arrhenius जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है और उस डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है।
यानी OH ions. This is the OH ions. So according to Arhenius, बेस वो सब्सटेंस है जो जिसको अगर हम पानी में डाल दें तो वो आयनाइज हो जाएगा और वो क्या पैदा करेगा, OH नेगेटिव आयंस पैदा करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी. सो कहते हैं मोस्ट ज़्यादातर जो बेसिस होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं. तो other bases, you can say other bases are substances that reacts with the water to remove a hydrogen ion. कुछ बेस ऐसी होती है जो पानी के साथ ये जब रिएक्शन करते हैं तो फिर वो क्या हाइड्रोजन आयन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस को छोड़ जाते हैं. तो कुछ बेसेस ऐसे भी होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये जो दिया गया है कि H ion is unstable, so it reacts with the H2 to form hydronium ions. So you can say that according to this, when H ions, you can say self-dissociation of water. This is if H ion is present in water. So this is the water. So you can say. तो ये करें कि H आयंस क्या अनस्टेबल होता है और ये पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O, यानी H आयंस ये पानी के साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+. तो यहाँ पर एक बेस दिया हुआ है BOH. दिस इज द बेस. It's in aqueous solutions. It produces B+ and OH ions. So according to Arrhenius, this is a base. BOH is a base because in aqueous solution it produces B+ and OH. You can see it produces OH ions. So according to Arrhenius, this is a base. These substances such as sodium hydroxide, KOH, NF-H4OH, MgOH2, COH2, etc. are bases because they ionize in aqueous solution to produce OH ions. तो ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं यानी NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या बेसिस है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में OH आयंस पैदा करते हैं. जैसे कि नीचे बताया गया है कि ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड. So I think this is not test sets, these are bases. So we can say, so this is a basis, you can say sodium hydroxide is base which dissociate in aqueous solution to produce OH ions. This is, you can say, sodium ions plus OH ions. This is potassium hydroxide, KOH, which produces K+ and OH ions. This is ammonium hydroxide, which if you put it in water, it produces ammonium ions plus OH ions. So this is the magnesium hydroxide, which in aqueous solution of water produces Mg+2 plus 2OH. This is calcium hydroxide, COH2, which produces Ca+2 plus 2OH minus. Ammonium hydroxide produces Al+3 plus 3OH ions. So we can say these are all bases because these all produces we can say that this all produces OH ions in aqueous solution. So these are OH ions. So these are all bases because they produces OH ions in aqueous solution, and this is the water, the aqueous solution. So according to Arrhenius,
any substance which produces OH ions is called a base. Now, this is summary of the Arrhenius concept. Acids give H plus ion in water, bases give OH in water. So this the limitation of Arrhenius concept, इसकी जो खामियाँ बताई गई कि Arrhenius जो थ्योरी है उसकी खामियाँ क्या है, तो Arrhenius की खामियाँ क्या है? नंबर एक, Arrhenius जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, is only limited to aqueous medium and does not explain the acidity or basicity of the substance in aqueous medium. Arrhenius concept acids are limited to hydrogens ions only and bases are limited to hydroxide ions. It cannot explain the acidic nature of carbon dioxide and basic nature of ammonia. तो ये Arrhenius थ्योरी की जो खामी है वो ये कि जो Arrhenius कंसेप्ट है ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक महदूद होता है और एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करता किसी सब्सटेंस का. तो ये उसके एक्वस सोल्यूशन में अगर यानी कि ये कहते हैं कि Arrhenius जो थ्योरी है वो सिर्फ यानी एक्वस मीडियम तक का ये महदूद है और ये किसी एक्वस नॉन एक्वस सोल्यूशन में एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करता. यानी जो Arrhenius थ्योरी है वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में एसिडिटी और बेसिसिटी को बयान करते हैं और नॉन एक्वस में बयान नहीं करता, जिसकी खामी है, बड़ी खामी है. दूसरी खामी है कि जो Arrhenius थ्योरी है वो सिर्फ वो हाइड्रोजन आइंस को एक्सप्लेन करता है एसिड में और बेसिस में सिर्फ हाइड्रोक्साइड आइंस को एक्सप्लेन करता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एसिडिक नेचर है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता और एमोनिया का जो बेसिक नेचर है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता. तो ये भी उसकी एक दूसरी बड़ी खामी है. We can say that this is example 10.1 which once the following are Arrhenius acid and bases. So this is COH whole twice and HNO3 NOH, H2SO4 and KOH. You can say calcium hydroxide, nitric acid, sodium hydroxide, sulfuric acid and potassium hydroxide. So we can say, so in this Arrhenius acid and bases, so this is the Arrhenius base because it produces OH ions. So B is the Arrhenius acid because it produces H plus ions. So this is H plus ions. And NOH is Arrhenius base because it produces OH ions. H2SO4 sulfuric acid is Arrhenius acid because it produces H ions. Similarly, KOH is Arrhenius base because it produces OH ions. So these are given that B and A are acids. They will the compounds which have the ability to donate hydrogen ions in aqueous solutions. So B and D, we can say B and D, which B and D. So B and D, so this one B and D. This is the ability to donate hydrogen ions. You can say produces or donate H ions. So this is some factor. So this is the second. The C and E are bases. They are the compounds which have the ability to donate hydroxide ions in aqueous solution. So we can say that C and E are bases because they produces or donates OH ions in aqueous solution. So this is you can say the self-assessment. This is another theory about acid and bases. This is Bronsted, Lowery, Bronsted Lowery concept of acid and theory about acid and bases.
So in 1923, the Danish chemist J.M. Bronsted and an English chemist Tim Lowery independently expanded the Arhenius acid and base definition. So we can say that according to this concept, a Bronsted Lowery acid is a substance or molecule, we can say, or ions that is a proton donor, whereas Bronsted Lowery base is a substance, molecule or ion that is proton acceptor. So we can say that Bronsted Lowery acid is the molecule or ion which that is a proton donor. So in this case, HCl is containing hydrogen ions, so it gives one hydrogen to ammonia, it produces ammonium ions. So HCl is a proton donor. So according to Bronsted Lowery, HCl is an acid, whereas the Bronsted Lowery base is a substance molecular ions that is a proton acceptor. So ammonia is accepting hydrogen ion from HCl. So we can say ammonia is a proton acceptor. So we can say that ammonia is a Bronsted Lowery base. So this is an acid, HCl is an acid, and ammonia is a Bronsted Lowery base. So now hydrochloric acid acts as a Bronsted Lowery acid when it reacts with ammonia. In this example, HCl donates a proton and acts as acid, while ammonia accepts proton to form ammonium ion and serves as a base. Water can also act as a Bronsted Lowery acid. For example, the following reaction in which a water molecule donates a proton to the ammonia molecule. So we can say that in these reactions, we can see that this is water and this is the ammonia. So it shows that water, you can say H2O, this is water, it acts as a Bronsted Lowery acid because water molecule donates proton to ammonia. So in this case, when water donates H ion or proton to ammonia, in the product ammonium ion and OH ion is produced. So therefore, you can say that water acts as a Bronsted Lowery acid. Similarly, in another example, water acts as a Bronsted Lowery base as it accepts proton from HCl. So in this case, water plus HCl produces hydronium ion and chloride ion. But in this case, you can see that H2O is accepting proton from HCl. So in this case, H2O is accepting proton. So according to Lowery Bronsted, water is a base, Bronsted Lowery base, while as HCl is donating a proton, so it is acts as an acid. So HCl is an acid and H2O is a base in this case. So therefore water molecule acts both as an acid as well as a base, so it is also called amphoteric. So amphoteric is a substance which acts both as an acid and base. Example is water molecule. So this is a amphoteric because it both acts as a acid and base. So this is shown that hydrochloric acid
gas combined with ammonia gas, resulting in the formation of white smoke of solid ammonium chloride. So we can say that HCl is in this case, we can say that this is the hydrochloric acid. So this is HCl, and it's reacts with ammonia. So when it reacts with ammonia, it produces white smoke. This is white smoke. Produces white smoke of ammonium chloride. So we can say that when HCl reacts with ammonia, it produces ammonium chloride. So this is the reaction between ammonia and HCl produces ammonium chloride, which is white smoke. So we can say that some Arhenius hydroxide bases such as NOH are not Bronsted Lowery bases. It is because these compounds are not proton accepted, whereas which has produced in solution is the Bronsted Lowery base, because it is the species that can accept a proton. तो ये बता रहे हैं कि जो some Arhenius जो बेसिस होते हैं सच सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होते हैं, वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस नहीं होते, यानी इस तरह NOH क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेसिस नहीं है। तो उसकी वजह ये कि ये जो कंपाउंड्स हैं, दिस कंपाउंड्स ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लाउरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब NaOH तो बेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्रॉन्स्टेड द सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस नहीं है, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। Because OH ion produced in the solutions, the Bronsted Lowery base produces in aqueous solutions is the Bronsted Lowery base, because it is the species that can accept a proton. So we can say, यानी कि जो लाउरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है उसके मुताबिक जो NaOH है वो बेस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि हकीकत में जो NaOH है वो जब आयनाइज हो जाता है, उसके OH आयन जो बन जाते हैं तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और वो हकीकत में वो क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जबकि लाउरी कहता है कि ये जो है ना बेस नहीं है। So this is you can say the reverse phenomenon of Arrhenius and Lowery. So the contradiction between the Arrhenius and Lowery theory. So next one is you can say the conjugate acid and bases. When an acid gives a proton, it forms negatively charged species which can accept proton and acts as a base. It's called conjugate base of the corresponding acid. So this is the CH3OH acetic acid that reacts with water to produce acetate ion and hydronium ion. So ये बता रहे कि जो conjugate acid ये क्या चीज़ है और conjugate base क्या चीज़ है। जब acid हो
प्रोटॉन देता है, तो ये क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी प्रोड्यूस करता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और वो एक्ट एज ए बेस एक्ट करता है, तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। मिसाल के तौर पर ये एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, जब पानी के साथ हम इसको मिलाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, एसीटेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो ये जो एसीटेट आयन है ये क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या है, इसके यानी कि कॉन्जुगेट बेस है ऑफ द एसिड। इस एसिड एसिटिक एसिड का, इस एसिड का ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। तो एसीटेट आयन जो है ये एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। सो when acetic acid loses proton, it forms acetate ions which can take a proton and act as a base, and thus acetate ion is called conjugate base of the acid of CH3COOH. So when a base takes a proton, it forms positively charged species which acts as a acid and is called conjugate acid of the corresponding base. So in this case, you can say that ammonia plus react with water to produce ammonium ion and hydroxide ions. So ammonia is a base. In this case, you can say ammonia is a base, and ammonium ion is a conjugate acid of the ammonia. While in this case, H2O is an acid, while OH ion is its conjugate base. तो ये बताते हैं कि जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या लेता है तो वो क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज आयंस स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। जैसे ये हमारे पास अमोनिया है, ये बेस है, इसने पानी से क्या किया, प्रोटॉन्स को ले लिया, तो इसने प्लस NH4 NH प्लस यानी इसने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को प्रोड्यूस किया जो कि एज ए एसिड काम करता है। ये क्या है, एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये जो एसिड है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। इस यानी अमोनिया का ये जो अमोनियम आयन है ये कॉन्जुगेट बेस है। सिमिलरली जो पानी है जो एज ए एसिड रिएक्ट करता है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, तो ये क्या है, यहाँ पे OH आयन जो बनते हैं तो OH जो कॉन्जुगेट बेस है ऑफ वाटर का। Now next one is, you can say that this is a 10.13, the Lewis concept of acid and bases. The Arhenius and Bronsted Lowery definitions can explain most acid and bases. Both definitions believe that an acid contains or produces hydrogen ions or protons. A third classification of acids and bases are introduced in 1923 by G. L. Lewis. His definitions emphasizes upon the role of electron pairs in an acid-base reaction. तो यानी जो अरहीनियस और ब्रॉन्स्टेड लाउरी जो थ्योरीज है वो दोनों ये बताते हैं कि एसिड्स जो है हाइड्रोजन साइंस को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटॉन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद 1923 में लिविस ने एक थ्योरी पेश की, यानी 1923 में जो G. L. लिविस है उसने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी के मुताबिक ये जो थ्योरी है उसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनस्फीयर का जिक्र उसमें है कि यानी एसिड और बेस की जो डिफिनीशन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे उसने किए जो लिविस है। तो वो कहता है कि लिविस एसिड है वो स्पीशीज है, लिविस एसिड इज स्पीशीज आयन और मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट्स are trained to accept a pair of electron. लिविस
थ्योरी के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो यानी आयन या मॉलिक्यूल है जो तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। उस यानी अगर कोई स्पीशी यानी आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि क्या है एसिड। You can say that Lewis base. This is the Lewis acid, and the Lewis base is a species ion molecule that can donates or tend to donates a pair of electron. ये Lewis base हो गया, Lewis acid. तो लेविस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है, वो आयन मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यू कैन से यानी लीव्स के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू लीव्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो एसिड इज a substance according to the Lewis theory. Acid is a substance which accept a pair of electron, while a base is a substance which donate a pair of electron. So this is the theory of Lewis. So now we can say that here is given examples. So an acid reactions involve the donation of electron pair from a base to an acid and forming a coordinate covalent bond. तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है फिर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दे रहा होता है, दूसरा ले रहा होता है, यानी बेस जो ना ले रहा होता है, एसिड दे रहा होता है, तो फिर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उसके नतीजे में बनता है। तो कंपाउंड्स हैविंग लेस देन 8 electrons in their valence shells are positively charged ions that can accept an electron pair can act as a Lewis acid. यानी वो कंपाउंड्स जिसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वी कैन से तो वो कंपाउंड्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज आयंस हों जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्ट एज ए एसिड, यानी कि दीज आर एसिड्स। सो जबकि वो कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बिहेव एज ए ल्यूइस बेसिस। सो यानी कि वो कंपाउंड्स जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद होता है, या नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो ल्यूइस बेसिस है। यानी ल्यूइस बेसिस इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करते हैं, जबकि ल्यूइस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। So we can say that, for example, an acid-base reactions involve the donation of electron pair from the base to the acid to form a coordinate covalent bond. So this is the example. It's a given. CCBF3. It is an acid, and you can say that ammonia is a base. So in this case, ammonia is a base. So in this case, you can say that ammonia is this containing a lone pair of electrons. You can say this is the lone pair of electrons. So this one. So this lone pair of electron is donating to the acid. So in this case, the acid accept the lone pair of electron from the base, so to form coordinate covalent bond. So here is the case. This is the lone pair of electron of
ammonia, which is given to the BF3 to form. This is a coordinate covalent bond formed between the BF3 and H3. You can say by the sharing of this pair of electron. So you can say donation of electrons pair to the. Similarly, this is the case of hydrogen ions and ammonia is a base. So you can say that this electron pair is given to hydrogen ions. So in this case, you can say by sharing of this electron pair, so ammonium ion is produced and this is the case. Similarly, H ion plus H2O, so this electron pair is donated. So in this case, hydronium ion is produced. So comparison of three acid-base definitions is given table. So you can say that is the Arhenius acid and bases. So Arhenius acids are those which produces H or H3O plus ions in solution. While according to Arrhenius, the bases are those which produces OH ions. Bronsted-Lowery, according to the Bronsted-Lowery theory, acid is those which is a proton donor, which donate a proton, while a base is species which accept proton. So according to the Lewis concept, acid is a substance that can accept an electron pair, while the base is a substance which can donate electron pair. So this is the case. The three theories. So difference between three theories, three concepts. So now here it's given that types of acids. So acids can be classified in terms of number of protons that can be given per molecule of an acid and added to the water. Acids are classified in the basis of you can say these are monoprotic acids and polyprotic acids. Monoprotic acids are the acids which produces one proton per molecule are called monoprotic acid. यानी जो मोनोप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स हैं जो एक प्रोटॉन को एक मॉलिक्यूल जो एक प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है उसको मोनोप्रोटिक कहते हैं. जैसे HCl है, HNO3 है, HCl है, तो ये जो है यहाँ पे HCl एक प्रोटॉन इन H को प्रोड्यूस करता है HNO3 में, एक H आइंस प्रोड्यूस होता है, और सिमिलरली एन HCl 1H is produced, and similarly in acetic acid 1H is produced, H ion is produced, so therefore these are called monoprotic. So next one is polyprotic acid. Polyprotic acid, so those which produces more than one proton per molecule are called polyprotic acids. For example, sulfuric acid produces 2 H ions because this formula is H2SO4, so it produces 2 H ions, so therefore it is called polyprotic acid. Similarly, diprotic acid H3PO4, it produces 3 hydrogen ions. You can say the H2SO4 is diprotic acid and H3PO4 is diprotic acid because H3PO4 produces triprotons. It's 3 protons. So now types of bases. So you can say that bases are classified in terms of OH that can be given per molecule of base when added on to water. The bases are classified monoacidic bases and polyacidic bases. Monoacidic, we can say that mono acid bases, the basis which produces 1 OH ions per molecule in aqueous solutions are called monoacid bases. For example, NaOH which produces 1 OH ion
KOH produces 1 OH, this also produces 1 OH. So these are monoacid bases. You can say monoacid bases because these bases produces only 1 OH ions in aqueous solution. So we can say that polyacid bases. So polyacid bases are the bases which produces more than 1 OH ions per molecule in aqueous solutions. They're called polyacid bases. For example, barium hydroxide produces 2 OH ions. The calcium hydroxide produces 2 OH ions. FeOH3 produces 3 OH ions. So these are polyacid bases. LOH3 produces 3 OH ions. So you can say this basis produces more than 1 OH ions per molecule. Therefore, these are called polyacid bases. So you can say now so next one is strength of acids and bases. So we will discuss this in next lecture. You can say next video. So